Hello everyone, welcome to Saral English at Sakar Institute. So today we are going to start with active and passive voice. Now what exactly do you mean by active and passive voice? I've been getting this request from many children of my society that I should do this topic on my video. Now active and passive voice is not any kind of voice. ये कोई आवाज नहीं है किसी तरह से. It's just different forms of verb which are used in English language. Now, to understand it very simply, we must understand that active voice is that where the doer or the subject is important. That means कौन काम कर रहा है. Clear? That person is important. Like you can say, the teacher teaches the students. तो कौन पढ़ाता है? टीचर पढ़ाता है. So the emphasis is on the teacher. So here the subject, that is the doer, is more important. I can say the same sentence in a very different way, like the students are taught by the teacher. So here the emphasis shifts from the teacher to the students. एम्फेसिस हमारा कहाँ शिफ्ट हो जाता है? टीचर से स्टूडेंट्स पे शिफ्ट हो जाता है. तो हम यहाँ क्या बात करें कि स्टूडेंट्स पढ़ते हैं टीचर से या स्टूडेंट्स को टीचर द्वारा पढ़ाया जाता है. क्लियर? नाउ आई विल कीप इट वेरी सिंपल बिकॉज द मेन एम इज टू अंडरस्टैंड what is active voice and what is passive voice, and if certain sentences are given to you in your grammar book and all, then how can you change a sentence from active voice to passive voice? Fine. So as I told you before, in active voice the doer or the subject is more important. कौन काम करता है, कौन काम कर रहा है, किसने काम किया था, that person is important. In passive voice the you can say job is more important or the action is more important. या किस चीज के ऊपर एक्शन हुआ है, that becomes more important. Like you can say my mother cooks food in the morning. Fine. मेरी माँ सवेरे खाना बनाती हैं. Now if I talk like this, food is cooked by my mother in the evening, then the main emphasis is on food. और I can even skip the doer. मैं doer को नहीं भी mention करूंगी तो चलेगा. Food is cooked in our house before 9 o'clock. हमारे घर में 9 बजे से पहले खाना बन जाता है. अब वो खाना कौन बनाता है? मेरी मम्मी बनाती हैं, मैं बनाती हूँ, कुक बनाता है. That is not very important. The main emphasis is on the food. If I say the gardener waters the plants, माली पौधों को पानी देता है. Fine. So here the emphasis is on माली. Emphasis हमारा gardener पे है. But if I say plants are watered every evening, हर शाम को पौधों को पानी दिया जाता है, तो हम यहाँ पर एक्शन पे स्ट्रेस कर रहे हैं, एक्शन पे हम एम्फसाइज कर रहे हैं. So we talk like this, plants are watered. Now active voice is mostly used in spoken English. जब हम spoken English की बात करते हैं, जब रोजमर्रा की हम conversation की बात कर रहे हैं, तो it is better to talk in active voice. For the reason that active voice में जब हम बात करते हैं तो हम ज़्यादा clear होते हैं कि हम क्या कहना चाह रहे हैं. Active voice is more clear and straight. Fine. वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती है, तो उसमें आपका मैसेज एकदम से सामने वाले को समझ में आ जाता है. पैसिव वॉइस ऐसा नहीं है कि हम पैसिव वॉइस में डे टू डे लाइफ में बात नहीं करते हैं, बट इन कंपैरिजन टू एक्टिव वॉइस इट इज वेरी लेस. पैसिव वॉइस इज मोस्टली यूज्ड इन राइटिंग, लाइक फॉर एग्जांपल योर एसेज, आर्टिकल्स, जर्नल्स जो लोग लिखते हैं, ठीक है, वो लोग ज्यादातर इस लैंग्वेज का यूज करते हैं. लाइक अ वेरी मोटिवेशनल स्पीच वाज गिवन बाय द प्रिंसिपल. तो ये वाला आप जो सेंटेंस है, ये आप जब इन राइटिंग लिखेंगे तो वो ज्यादा सोफिस्टिकेटेड लगता है, ज्यादा एलिगेंट लगता है. बट जब आप डे टू डे लाइफ में कॉन्वर्सेशनल इंग्लिश में बात कर रहे हैं तो वहां पर शायद आप ऐसे जब बोलेंगे तो भी ठीक है, लाइक द प्रिंसिपल गेव अ वेरी मोटिवेशनल स्पीच. Fine. Like you can say they were highly inspired to do that job. वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो गए. किसने इंस्पायर किया यहाँ पे हम ये मेंशन नहीं कर रहे हैं.
or we can say in the other way, their Guruji inspired them to do great jobs in future or to perform very well in their future. Fine. So the emphasis is on Guruji. Fine. Now there are some rules for passive voice. पैसिव वॉइस में वर्ब की हम हमेशा थर्ड फॉर्म यूज करते हैं. क्लियर? लाइक अगर गो है, हम प्रेजेंट टेंस में बोल रहे हैं, माई, यू कैन से, you can take up another verb, sorry, like my mother teaches the students. Fine. So then you can say the students are taught by my mother. सो एम्फोसिस यहाँ पर हमारा जो है वो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म पे रहता है. एम्फोसिस क्या मतलब? हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज की जाती है. तो हियर आई विल स्टार्ट विद सर्टेन एग्जांपल्स. लाइक सपोज इफ आई से माय मदर कुक्स फूड, तो इसको जब मैं पैसिव वॉइस में बोलूंगी तो आई विल से लाइक दिस, फूड इज कुक्ड बाय माय मदर. फाइन. तो खाना मेरी माँ के द्वारा बनाया जाता है. तो फूड इज, अब क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है और फूड हमारा थर्ड पर्सन है. क्लियर? फूड आई नहीं है तो फर्स्ट पर्सन नहीं हुआ, फूड यू नहीं है तो सेकंड पर्सन भी नहीं हुआ. आई और यू के सिवाय कुछ भी जो थर्ड होता है दैट बिकम्स द थर्ड पर्सन. और फूड हम सिंगुलर में लेते हैं तो इट इज लाइक फूड इज कुक्ड बाय माय मदर. फाइन. तो इसका सिंपल हमारा रूल क्या होता है कि जो भी हमारा, हम यहाँ पे हमारा जो स्ट्रेस होता है पैसिव वॉइस में, द ऑब्जेक्ट जो है दैट एक्चुअली बिकम्स द सब्जेक्ट. जो ऑब्जेक्ट जो है वो, या जो एक्शन जो है वो सब्जेक्ट की प्लेस ले लेता है. क्लियर? सो इट बिकम्स लाइक ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाय. बाय को हम स्किप भी कर सकते हैं, डूअर को, depending on the construction of the sentence and depending on the importance of the doer. Fine. Like if I say the teacher teaches in the class, so yeah, the teacher teaches students in the class. So students are taught by the teacher. Students हमारा third person plural है, तो students are taught by the teacher. I do my homework in the evening. अब मैं I अपनी बात कर रही हूँ, लेकिन जब मैं इसको पैसिव वॉइस में कर देती हूँ तो द स्ट्रेस इज ऑन द होमवर्क. सो वी स्टार्ट द सेंटेंस विद द होमवर्क. अब होमवर्क बिकम्स अ थर्ड पर्सन, तो इट बिकम्स होमवर्क इज डन बाय मी इन द इवनिंग. क्लियर? द मेसन बिल्ड्स द हाउस. हाउस इज built by the mason. Clear? Now if we move to your present continuous tense, clear? If I'm saying she is watching the TV, वो टीवी देख रही है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में हमारा क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी. बट अगर मैं इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करती हूँ देन आई विल से लाइक दिस, TV is being watched by her. So यहाँ पर हमारा जो construction of the sentence है it becomes like object plus is MR depending कि वो third person है, में singular है, plural है, first person है, second person है. Clear? So object plus is MR plus being BEING. Clear? Plus verb third form plus by. Doer may be skipped, may not be skipped depending upon the importance of the doer. Clear? Or importance of the action. So if I say the gardener is watering the plants, so how will we say in the passive voice? The plants, अब यहाँ पे gardener क्या है हमारा? Singular है, तो हमने बोला था the gardener is watering the plants. But when we convert the sentence into passive voice, then we start with the plants. Now the plants are plural, so we'll say like this, the plants are, क्योंकि वो plural है, the plants are being watered by the gardener. The children are playing football. अब children are है,
लेकिन जब हम बात करते हैं पैसिव वॉइस में, विल स्टार्ट विद फुटबॉल. सो फुटबॉल इज सिंगुलर. फुटबॉल इज बीइंग played by the children. Clear? Okay, let's move to present perfect tense. Suppose I say, I have submitted my project. Fine. So how will we speak in the passive voice? The project, a project क्या है? Third person है. Clear? तो third person singular के साथ हम क्या लगाते हैं? Has. So the project has been submitted by me. Clear? The police has caught the thief. So in passive voice, how would you say that? The thief has been caught by the police. So in present perfect tense, what is the construction of the sentence? Object plus has been or have been, depending upon whether it's first person, second person, third person, singular or plural. Clear? Plus verb third form, like the thief has been caught by the police. I have served him the breakfast. मैंने उसको breakfast serve कर दिया है, तो I have. But when I speak it in passive voice, then I'll say like that, he has been, because he के साथ has आता है. We don't use have. Clear? So he has been served the breakfast. Here it is not important for me to say by me. Fine? Because I don't think the sentence would look very nice. Fine? तो हम यहाँ पे skip कर सकते हैं doer को और हम simply बोल सकते हैं he has been served the breakfast. Clear? Let's move forward. If we talk in past tense, like I say, I saw him in the market. मैंने उसको मार्केट में देखा था. तो इसको हम पैसिव वॉइस में कैसे बोलेंगे? He was seen by me in the market. See, again I'm telling you, जब हम passive voice में बोलते हैं he was seen by me, fine. You can say, if I say I teach the students are taught by me. तो passive voice में spoken English में sentences सुनना बहुत impressive नहीं लगता है, या बहुत आपको it doesn't create a very good impression. So that's why I'm telling you, when you are talking or when you are talking, when you're conversing, fine, तो आप spoken English में usually मतलब emphasize करिए कि आप unnecessarily passive voice का use ना करें. Only when it is required, only when it is, like I said, only when it is required. So this is passive voice, fine. So जहाँ पर ज़रूरत होती है, फाइन, वहाँ पे वो अवॉइड नहीं कर सकते हैं. वहाँ पर ऑब्वियसली यू विल हैव टू यूज पैसिव वॉइस. बट अब मैं आपको ज़बरदस्ती बोलूँ, जैसे मैंने आपको बोला यू विल हैव टू यूज पैसिव वॉइस. अब इसको मैं बोलूँ पैसिव वॉइस विल हैव टू बी चोजन बाय यू, इट लुक्स सो ऑकवर्ड. फाइन, ये सेंटेंस में कोई मज़ा ही नहीं है. लगेगा मैं फालतू में अपना कुछ अंग्रेजी का ज्ञान झाड़ने के लिए आपके सामने कुछ उल्ट शुल्ट बात कर रही हूँ. इट डजंट मेक एनी सेंस एट ऑल. फाइन. सो लैंग्वेज का मेन पर्पस होता है कि हम अपने आप को सामने वाले तक क्लियरली अपना मैसेज हम पहुंचा सकें. हम अपना कम्युनिकेशन जो है वो जितना सिंपल रख सकें और हमारी बात मेनली आगे कन्वे हो सके. दैट इज़ द मेन पर्पस ऑफ एनी लैंग्वेज, be it Hindi, be it English, be it French, be it Punjabi, be it any language. Clear? तो लैंग्वेज का मेन पर्पस ये नहीं होता है कि हमने सामने वाले को बहुत ज़्यादा अपने फ्लावरी वोकैबुलरी से या फ्लावरी एक्सेंट से उसको इम्प्रेस करना है, बिकॉज दैट डजंट सॉल्व द पर्पस. हमारा मेन, जैसे आप देखते हैं पीपल हु कैन नॉट स्पीक, वो कैसे लैंग्वेज यूज करते हैं? ऑब्वियसली दे यूज साइन लैंग्वेज. क्लियर? तो वहां पर उनका मेन मकसद ये नहीं है कि वो कितनी तेज चुटकी बजा सकते हैं या वो कितनी तेज क्लैपिंग कर सकते हैं. मेन मकसद ये है कि सामने वाला उनकी बात सुन ले. क्लियर? So that is the main motive of any language. Because I have been requested to do this lesson, and this is mainly for the kids who go to school, who are school going children, और उनके lesson में ये है active passive voice, and it is quite confusing at times, I see. So that is the main purpose I'm doing this
lesson. I would have done this lesson otherwise also, मैं ये वैसे भी कराती, लेकिन क्योंकि मैं इसको बिल्कुल रूल वाइज आपको समझा रही हूँ, like object plus is MR plus verb third form, वो मैं basically I'm keeping the school students in mind and that's why I'm doing it. But others will definitely benefit from this. Fine, they will also benefit from this because passive voice हम ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल नहीं use करते हैं अपने day to day conversation में, we do use it. Clear? So we were doing past tense, like I say, the clerk wrote a letter. Fine. So here in the passive voice we can say a letter was written by the clerk. Clear? The girls the girls stitched a dress. So a dress was stitched by the girls. So in past tense, what is the construction of the sentence? It becomes object plus was were plus verb third form. Like Rohan sang a song. A song was sung by Rohan because the third form of sing is sung. Clear? Now let's come to past continuous. He was singing a song. वो एक गाना गा रहा था. See, the rule is same as your present continuous only, बस ये है कि वहां पर is MR हम यूज कर रहे थे, यहाँ पर हम उसकी जगह was were यूज करेंगे. Fine. So he was singing a song. So passive voice में becomes a song was being sung by him. तो जो भी हमारे कॉन्टिन्यूस टेंसेस होते हैं जहाँ पे ing आता है, तो उनको जब हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो आपको सिंपली ये रूल याद रखना है कि वहां पर भी ing आएगा, लेकिन वो बीइंग के फॉर्म में आएगा, लाइक बी प्लस ing. क्लियर? तो शी वॉज डांसिंग इन द रूम. क्लियर? तो इसको आप ऐसे कर सकते हैं, अ डांस वॉज बीइंग परफॉर्म्ड बाय हर. क्लियर? ही वॉज यू कैन से okay, he was cleaning the room, so the room was being cleaned by him. Clear? Okay, now if we move to past perfect में हम कैसे बात करते हैं? Subject plus had plus verb third form. Like I had received a parcel yesterday. तो इसको मैं passive voice में कैसे बोलूंगी? A parcel had been received by me yesterday. Time mentioning time may be important, may not be important. Fine. If you are writing, if you are doing school work, you can write it down because otherwise your marks will be deducted. Okay, fine. He had told me everything. So here you can say I had been told everything by him. Or you can even say everything had been told by him to me, whatever. Depending ये आपका sentence construction क्या है. कई बार आपके दो objects होते हैं तो वहाँ पर थोड़ा सा आप किसी पर भी stress दे सकते हैं. Like you can say he had told me everything. इसको वैसे भी बोल सकते हैं I had been told everything by him. Or you can say everything had been told by him to me. तो यहाँ पर दोनों में से किसी का भी stress हो सकता है. Like everything पर भी stress हो सकता है या I पर भी stress हो सकता है in the form of me. Fine. Okay. Or you can say the food, they had served dinner to the guests. So in passive voice it becomes the guests had been served the dinner. So in in past perfect tense, the construction becomes object plus had been plus verb third form. Clear? Now let's move to future tense. Future tense may, like if I say I will receive the letter tomorrow. Clear? Yeah, I will write a letter tomorrow. So here how will we speak in passive voice? Verb की हमारी third form ही आएगी, चाहे भले ही वो future tense है, because it's a passive voice. So a letter will be written by me. Like suppose I say I will write a letter to the principal. So a letter will be written by me to the principal. A letter will be written to the principal by me. Anything you can say. So because the main stress is on letter, so we are starting with letter.
So here the construction of the sentence becomes object plus will be plus verb third form plus by, जिसके आगे आप doer को, again I said depending upon the sentence, depending upon the importance of the doer or the importance of the action, you may add it or you may skip it. Clear? Or you can say they will play the match tomorrow. A match will be played tomorrow. A match will be played by them tomorrow. Clear? So that's what I'm saying. When we speak certain sentences in passive voice, they actually don't sound so good. They actually don't sound so impressive. Fine. So they are mostly used in your passive voice. Like I said, use the sentence right now. They are mostly used. क्लियर, वो यूज़ किए जाते हैं. तो इस तरह की ही बातों में हम पैसिव वॉइस का यूज़ करते हैं. अदरवाइज वी मोस्टली टॉक इन योर एक्टिव वॉइस ओनली. क्लियर. Now there is no point in carrying out in future continuous tense, future perfect tense, because वो हम बिल्कुल यूज़ नहीं करते हैं अपने डे टू डे लाइफ में. क्लियर. एंड इन योर स्कूल बुक्स एंड ऑल, इन योर स्कूल कोर्स मटीरियल एंड ऑल, दिस इज नॉट मेंशन्ड. क्लियर. ओके. Now I'll speak certain sentences and we'll try to convert them into passive voice. Sohan likes apples. So this is active voice. How will you convert it into passive voice? Apples are liked by Sohan. Mother is cooking food. Food is being cooked by mother. Children have broken the glasses. The glasses have been broken by the children. War destroys everything. Everything is destroyed by a war. Father will sign the checks tomorrow. The checks will be signed by father tomorrow. Clear? Okay. He is carrying a bag. A bag is being carried by him. The children are making a lot of noise. A lot of noise is being made by the children. He has stolen my money. My money has been stolen. Now in this sentence we may mention by him or we may not mention. कई बार हम ऐसे बोलते हैं मेरे पैसे चोरी हो गए हैं. फाइन, वी डोंट नो किसने किए हैं, तो हम वहाँ पर सेंटेंस सिर्फ ऐसे बोलेंगे माई मनी हैज़ बिन स्टोलन. फाइन. माई लाइक इफ आई से कि मेरा बैग फट गया है. माई बैग हैज़ बिन टॉर्न. फाइन. सो या फाड़ दिया गया है. क्लियर. सो यहाँ पर जब हम इस तरह की बातें करते हैं तो वहाँ पर हम पैसिव वॉइस में वी डोंट मेंशन द डूअर. क्लियर. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. I will do one more session in active passive voice where I will only take a few sentences in active voice, will convert them into passive voice, will pick up few sentences in passive voice, will convert them into active voice. Fine. And do practice it. If you have any doubts, any confusion still are left there in your like mind and all, you can always write to me in the comment box. I'm always ready to make new videos for that. Fine. And do practice it. And as I told you again, this is mostly used in your writing skills only, like when you're writing essays or articles or journals. So that's all for today. Bye-bye. See you in the next class. And don't forget to like, share and subscribe. Bye-bye.